Hey Baker fam, welcome back to our channel. I'm Chef Aruna from Truffle Nation Baking Academy और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी एंड क्लासिक केक which is also one of the best seller in the bakery market, that is eggless black forest cake. Black forest cake एक classic German dessert है which consists layers of rich chocolate cake, whipped cream and luscious cherries. So before starting the recipe, make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले so that you guys can stay updated with all our upcoming videos. And without wasting more time, let's start the recipe. So सबसे पहले हम अपना baking tin तैयार करेंगे. We'll grease the tin and place butter paper at the bottom. यहाँ पर मैं 6 इंच राउंड टीन यूज कर रही हूँ. आप चाहे तो किसी भी शेप का टीन यूज कर सकते हैं. So our baking tins are ready. अब हम एक बोल में अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल पर्पस फ्लावर. Followed by natural cocoa powder, baking soda, salt and sugar. As you guys know, sieving helps in preventing lumps, so make sure that you sieve all the dry ingredients. Now in a different bowl, हम सारे liquid ingredients को mix कर लेंगे. We'll add in milk, water, oil, melted butter and vanilla essence. We'll give it a mix. So जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा लिक्विड मिक्सचर रेडी है. अब हम इस मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ग्रेजुअली ऐड करेंगे. और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे. So our batter is ready. अब हम इस बैटर को इन दो टिन्स में इक्वली पोर करेंगे. Now we'll bake them at 180 degrees Celsius for about 35 to 40 minutes or until toothpick inserted in the middle comes out clean. Meanwhile, we'll make our other elements, that is dark chocolate mousse, frosting, soaking syrup and chocolate curls. So सबसे पहले हम अपना फिलिंग बनाएंगे और उसके लिए फर्स्ट विल मेक डार्क चॉकलेट गनाश. So सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे और इसमें वार्म क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे. If you do not have dark chocolate, आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं.
Now we'll beat whipping cream until stiff peaks. अब हम इसमें गनाश को फोल्ड करेंगे। We'll transfer it to a piping bag and keep it aside for further use. For frosting, we'll beat simple whipping cream until soft peak. इसे भी हम पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लेंगे। Now for the soaking syrup, we'll dilute red wine with some water. If you do not want to use alcohol in this recipe, you can simply use vanilla soaking syrup. We'll keep this aside and start making the chocolate shaving for the garnish. Now we'll make the chocolate shaving for the garnish. उसके लिए हम एक डार्क चॉकलेट की बार लेंगे और पीलर से पील करेंगे to get nice curls. So all the elements for the cake are ready. We'll now move on to the assembly of the cake. So our cake is baked properly और ये completely ठंडे हो चुके हैं. And all the elements are here. अब हम इसे carefully demold करेंगे with a palette knife. Make sure कि demolding के time palette knife का pressure tin के तरफ हो, as we don't want to break our cake. If you have any dome on your cakes, make sure to trim it. We will divide them into two parts using cake leveler. Now on a cake base, we'll pipe some frosting and spread it. इसके ऊपर हम एक स्पॉन्ज की लेयर प्लेस करेंगे। अब इस स्पॉन्ज को हम सोकिंग सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। Next, we'll pipe frosting around the corner and spread dark chocolate mousse in the middle.
इसके ऊपर हम होममेड चेरी कंपोट ऐड करेंगे। होममेड चेरी कंपोट की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक फॉर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन एरिया बिलो। Now we'll place the second layer of sponge on top and repeat the same process as before. मेक श्योर कि आप टॉप लेयर को भी सोक कर लें। अब हम इस केक की क्रम्ब कोटिंग करेंगे। For that, we'll pipe thin layers of frosting all over the cake and smooth it out using palette knife. मेक श्योर कि आप एक्सेस फ्रॉस्टिंग को एक स्क्रैपर से रिमूव कर लें। Now we'll keep it in the freezer for about 15 minutes. Meanwhile, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो I'm sure you will absolutely love our white forest cake tutorial, link for which I'll be sharing in the description area. So our crumb coated cake is out of the fridge. Now we'll give it a final coating. उसके लिए we'll pipe frosting all over the cake and smooth it out. We'll also pipe shell borders on top. Now for decorating the cake, we'll stick chocolate curls on all the sides of the cake.
Sprinkle it on top as well. Lastly, we'll place fresh cherries on top. And here you go guys, हमारा eggless black forest cake तैयार है. Let us know in the comment section if you guys like this tutorial or not. And show some love by clicking on the like button. Till then, keep baking.